Question 1. Explain the early supernatural approach of understanding psychopathology. Answer. The early supernatural approach of understanding psychopathology. 1. In the past, people attributed mental disorders to supernatural causes, such as demonic possession or curses. 2. These supernatural explanations were based on beliefs in spirits, witchcraft, and divine punishment. 3. Mental disorders were often seen as a result of being influenced or controlled by malevolent supernatural forces. 4. Treatment methods included exorcisms, rituals, and prayers to drive out evil spirits or remove curses. 5. The focus was on spiritual or religious interventions rather than medical or scientific approaches. 6. Mental disorders were often stigmatized, and individuals with these conditions were sometimes ostracized or feared. 7. As scientific knowledge advanced, the supernatural approach was gradually replaced by biological models that emphasized physical causes and imbalances in the body. 8. The shift towards biological explanations paved the way for more effective and evidence-based treatments for mental disorders. मानसिक विकार को समझने के पहले प्राचीन सुपरनैचुरल दृष्टिकोण का निरूपण। 1. पुराने समय में लोग मानसिक विकारों को असाधारण शक्तियों और अपर्याप्त बाधाओं के कारण मानते थे। 2. उन्हें लगता था कि शैतानी या अभिशाप की कृपा से ही विकार होता है और प्राकृतिक कारणों को नहीं माना जाता था। 3. उनकी मानसिक विकारों की व्याख्यानिका में इन विकारों का कारण अदृश्य शक्तियों द्वारा होने का कहा जाता था। 4. इन विकारों का उपचार भूत निकालने, यज्ञों और अनुष्ठानिक प्रयासों के माध्यम से होता था जिससे विकार का निवारण हो सके। 5. इस दृष्टिकोण में ध्यान धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों पर था, वैज्ञानिक तथ्यों पर नहीं। 6. मानसिक विकारों को अदृश्य शक्तियों द्वारा होने वाली समस्याएं माना जाता था और इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी अलग या भयभीत भी समझा जाता था। To describe the early Greek contributions in development of biological models of psychopathology. Answer. The early Greeks made important contributions to understanding mental disorders using biological models. Here is a simpler explanation. 1. Hippocrates, a Greek physician, believed that mental disorders had natural causes, not supernatural ones. 2. He thought that maintaining a balance of 4 body fluids, humorous blood, phlegm, black bile, and yellow bile was essential for good health. 3. Imbalances in these fluids could lead to different disorders, including mental disorders. 4. The Greeks treated all problems, including mental disorders, as an imbalance of body fluids. 5. Galen, a Roman physician influenced by Hippocrates, related the 4 humors to environmental factors like heat, dryness, moisture, and cold. 6. They used techniques like bloodletting, removing blood, and induced vomiting to restore the balance of body fluids and treat mental disorders. In simple terms, the early Greeks believed that imbalances in body fluids caused mental disorders. They used methods like bloodletting and induced vomiting to restore the balance and treat these disorders. पुराने यूनानी योगदानों में मानसिक विकारों के जीव वैज्ञानिक मॉडल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किए गए हैं। यहाँ एक सरल हिंदी में व्याख्या है। 1. यूनानी समय में विज्ञान की शुरुआत में लोग शरीर की रचना और कार्यों से जुड़े आश्चर्यजनक तत्वों को भगवानीय या अद्भुत समझते थे। 2. हिप्पोक्रेट्स ने ये कहा था कि असामान्य व्यवहार और मनोरोग भी शारीरिक कारणों से हो सकते हैं। 3. हिप्पोक्रेट्स ने 4 शरीरी तरलों, 4 ह्यूमर्स के संतुलन को महत्व दिया: खून, कफ, काला पित्त और पीला पित्त। 4. हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि इन तत्वों की अधिकता या कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। 5. ग्रीक चिकित्सा की यह दृष्टि पश्चिमी देशों में मेडिकल सोच के विकास को प्रभावित करती रही। 3. Explain the contribution of J. P. Gray and E. Kraeplin in development of psychopathology. Answer. J. P. Gray and E. Kraeplin made significant contributions to the development of psychopathology. Here is a simple explanation of their contributions. 1. J. P. Gray. He believed that mental disorders, such as insanity, always had physical causes.
He emphasized the importance of rest, proper diet, room temperature, and ventilation in treating these disorders. Gray even invented the rotary fan, which was used at State Hospital in New York to provide better conditions for patients. 2E. Kraeplin. He focused on the diagnosis and classification of psychological disorders. Kraeplin identified that each disorder had a specific age of onset, time course, and cluster of symptoms. His descriptions of schizophrenia, a psychotic disorder characterized by delusions and hallucinations, are still considered valuable. In summary, J.P. Gray highlighted the significance of physical factors and environmental conditions in treating mental disorders, while E. Kraeplin contributed to the understanding and classification of various psychological disorders. J. P. ग्रे और E. क्रेपलिन ने मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किए। यहाँ सरल हिंदी में उनके योगदानों की व्याख्या है। 1. J. P. ग्रे। उन्होंने यह माना कि मानसिक विकार, जैसे मनोहारिता, हमेशा शारीरिक कारणों की वजह से होती हैं। उन्होंने इसके उपचार में आराम, उचित आहार, कमरे की तापमान और हवानीकरण का महत्व बताया। ग्रे ने रोटरी फैन तक आविष्कार भी किया, जो न्यूयॉर्क स्टेट हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए प्रयोग किया गया। 2. ए. क्रेपलिन। उन्होंने मनोवैज्ञानिक विकारों के निदान और वर्गीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। क्रेपलिन ने पहचाना कि प्रत्येक विकार की एक विशेष उम्र, समयांतर और लक्षणों का समूह होता है। उनके वर्णन के अनुसार, मनोहरता एक प्रकाशमान विकार है जिसमें मिथ्या विश्वास और भ्रम होते हैं। 4. Give an account of insulin shock therapy and electroconvulsive therapy. Answer. Insulin shock therapy 1. In the 1920s, Manfred Sakel used high doses of insulin on patients. 2. The patients experienced convulsions and went into a coma-like state. 3. Surprisingly, some patients showed improvement after the therapy. 4. However, the method was dangerous and could cause coma or even death. 5. Insulin shock therapy was eventually abandoned due to its risks. Electroconvulsive therapy ECT1. In the 1920s, Joseph Meduna observed a lower occurrence of schizophrenia in epileptic patients. 2. It was believed that inducing brain seizures could cure schizophrenia. 3. ECT involved administering controlled electric shocks to the brain. 4. Doctors widely used ECT, but it was a controversial method. 5. Some doctors even used ECT as a form of punishment for difficult patients. 6. ECT is effective in treating severe depression and suicidal tendencies. Note these therapies were used in the past and have been replaced by safer and more advanced treatments in modern psychiatry. इंसुलिन झटका चिकित्सा 1. 1920 के दशक में मैनफ्रेड सैकल ने मरीजों पर उच्च डोज इंसुलिन का उपयोग किया। 2. मरीजों को ऐंठन और एक संक्रमित स्थिति में ले जाने का अनुभव हुआ। 3. चौंकाने वाली बात ये थी कि कुछ मरीजों में थेरेपी के बाद सुधार देखा गया। 4. हालांकि इस तकनीक का खतरा था और यह कोमा या मौत का कारण बन सकती थी। 5. इंसुलिन झटका चिकित्सा बाद में अपनाने से बचा गया क्योंकि इसमें जोखिम था। विद्युत संक्षेपण चिकित्सा ECT 1. 1920 के दशक में जोसेफ मेडुना ने ध्यान दिया कि मस्तिष्क रोग स्किज़ोफ्रेनिया अपरिवर्तित रूप से एपिलेप्टिक मरीजों में कम होती है। 2. इसका धारणा था कि मस्तिष्क में उत्पन्न प्रसंचार से स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज हो सकता है। 3. विद्युत संक्षेपण चिकित्सा में नियंत्रित विद्युतीय झटके मस्तिष्क को दिए जाते थे। 4. डॉक्टरों ने व्यापक रूप से विद्युत संक्षेपण चिकित्सा